Hello बच्चों, let us read the question. In a polygon, the number of the diagonal is 54. The number of sides of the polygon is. So before solving, we'll write the key concept first. Here the key concept is that suppose हम मान लेते हैं एक पॉलीगन है जिसके n sides हैं, तो कितने उसके number of the diagonals होंगे. So suppose we have a diagonal, we have a polygon of sides. हमारे पास है polygon of n sides, then it will have diagonals is equal to how many diagonals it will have? N into n minus 3 by 2 diagonals it will be having. So this was the key concept. So we have one more key concept is that NCR. Suppose we have to select the R object out of n object, then what we'll do here? N factorial divided by R factorial into n minus R factorial. Okay, so this is the formula and the key concept that we need to know. So let's come to the question. So it is given that the number of the diagonals is 54. So we have to find out the number of the sides. So we know the value. So we'll equate the 54 by this formula, n minus 3 by 2, and it will be 108 is equal to n square minus 3n. Okay, so we'll do factorization now. So we can solve it. N square minus 3n minus 108 is equal to 0. So हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब आगे n स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 12n प्लस 9n, और ये क्या हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 0. सो विल टेक n कॉमन हियर. सो n माइनस 12 और यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से n की वैल्यू, दो वैल्यू मिलेगा, एक तो निगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा. तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -9 और एक n इज इक्वल टू 12 आ रहा है. तो साइड्स कभी भी निगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, तो कौन सी वैल्यू लेंगे? विल टेक द ओनली पॉजिटिव वैल्यू. ओके, सो हम बोल सकते हैं n कैन नॉट बी निगेटिव. ओके, सो विल टेक n इज इक्वल टू 12. So we can say the sides is equal to 12. So this is our final answer. So here we can see the option B is right answer. So hope you understood it well. Best of luck.